सभी के पास वो 24 घंटे होते हैं। नाउ इट इज योर इंटरेस्ट, इट इज योर फोकस कि आप किस पे ध्यान देना चाहते हैं। जिस चीज पे आपके इंटेंशन होंगे, जिस पे आप ध्यान दोगे, वही चीज बढ़ेगी। I think women are already empowered. Okay, they are actually very powerful, and they can do multitasking, and they really are very impactful and powerful in their own. He said they need to understand their capabilities and come out of their comfort zone sometimes. So I try to deal it in a more mature way the next time when it happens. Okay, मैं बस ये जानती हूँ कि आप जो भी राह चुने, आप जो भी प्रोफेशन को सिलेक्ट करें, बस उसमें पूरी ईमानदारी और पूरी अपनी मेहनत लगा दें। बिकॉज अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, फोकस्ड हैं और ऑनेस्ट हैं, तो आई एम श्योर यू विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर। एंड अपने आप ही आप अपने आप ही आपके लिए साधन बनते जाएंगे, अपने आप ही आप राह पे चलते जाएंगे और आप मिलती जाएगी। देयर इज नो कैप्सूल और standard definition. See, I always believe in breaking the bigger tasks into smaller ones and celebrating those smaller milestones. So I always make those achievable goals. मुझे हर मूवी से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है. Even if it is a horror movie, it will tell me कि fight your fear like that. When you think you are right and still people are making noise, they are scolding you, they are ignoring you, or so. Think that their audience, because audience is there to make noise. You be the player. Welcome everyone to another exciting podcast episode of the RAD Show. आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो हर फील्ड में फिल इंस का एक एग्जाम्पल है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लेकर के ब्लॉगिंग, मोटिवेशनल स्पीकिंग और पेरेंटिंग तक इन्होंने हर रोल को अपने पूरे डेडिकेशन के साथ में निभाया। अभ्रेखा जैन हाईली अकॉम्प्लिश्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जिनके पास 18 ईयर्स 18 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है। एक टॉप एमएनसी में वो काम कर रही हैं और इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 2006 में की थी एंड तब से लेकर आज तक अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज और स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स के जरिए इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान ये बना पाई है। लेकिन ये सफर दोस्तों सिर्फ प्रोफेशनल नहीं था। एक मदर, एक मॉम होने के साथ साथ एक वाइफ के रूप में भी इन्होंने फैमिली एंड करियर के बीच में परफेक्ट बैलेंस बना के रखा है। तो जो आज की मॉडर्न वर्किंग वुमेन के लिए एक बड़ा ही प्रेरणा स्रोत है, एक इंस्पायरिंग एलिमेंट है। सो पेरेंटिंग के एडवोकेट होने के साथ साथ अभ्रेखा वुमेन एम्पावरमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस के टॉपिक पर भी खुले मन से बात करती है। इन्होंने अपने 18 साल के टेक करियर के बाद एक नए डायरेक्शन में भी कदम रखते हुए एक्सेलराई जमशेदपुर से ह्यूमन रिसोर्स कोर्स भी किया हुआ है, जिससे ये साबित होता है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का उनका जो विजन है वो कितना किया है। साथ ही अपने ब्लॉग्स एंड मोटिवेशनल स्पीकिंग के थ्रू ये छोटी बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करती हैं और उन्हें बढ़ने का एक इक्वल मौका देती हैं। आज हम उनके साथ में उनके सफर के बारे में आज हम जुड़ेंगे, उनके साथ में कुछ जानेंगे एंड स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के प्रति उनके जो विचार हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उनको भी हम समझेंगे और कैसे वो फैमिली एंड करियर के बीच में इतने ब्यूटीफुल, इतनी खूबसूरती से उसको बैलेंस कर पाती हैं। इन सब टॉपिक्स पर भी कुछ बातें करेंगे। So, दोस्तों मेरे साथ प्लीज वेलकम द मल्टी टैलेंटेड अभ्रेखा जैन। नमस्ते राहुल जी, डीबी जी, आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू। Alright, so Abhrekha, first of all, welcome again. You have had an incredible successful career. एक 18 साल का एक इतना incredible successful career, specifically in in MNC, in software engineering field. तो कैसे आपने इस करियर को फर्स्ट ऑफ ऑल चुना, मतलब आपने इसी करियर को क्यों ऑप्ट किया? आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट इनसाइट इनटू व्हाई पीपल मस्ट choose this even today if they want to, and how did your early success, like as a gold medalist as well, helped you shape your career, your journey into this particular field? अगर आप ये थोड़ा सा शेयर कर पाएं। सबसे पहले each one to their own, so this is no must that the path which I followed वही लोगों को follow करना है, but I can only talk about myself. So मेरे father बहुत technically inclined थे, he was in army, but he was very tech savvy. So बचपन से ही I was exposed to computers and all that at a very young age. So I was very fascinated. I took computers as a subject also in school और academics में अच्छी थी और computer engineer नाम से बड़ा टर्म से बड़ा fascination था. So I think my actions aligned to it, and with blessings and obviously my hard work, I could top the university, top the college, and get a gold medal, and which helped me to get campus place. So मैं बस ये जानती हूँ कि आप जो भी राह चुने, आप जो भी प्रोफेशन को सिलेक्ट करें, बस उसमें
पूरी ईमानदारी और पूरी अपनी मेहनत लगा दें, बिकॉज़ अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, फ़ोकस्ड हैं और ऑनेस्ट हैं, तो आई एम श्योर यू विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर एंड आप अपने आप ही आपका आपके लिए साधन बनते जाएँगे, अपने आप ही आप राह पे चलते जाएँगे और आपको सक्सेस मिलती जाएगी। देयर इज़ नो capsule or a standard definition, but if I have to summarize what helped me, मैं क्यों आज सब बैलेंस कर पा रही हूँ या kind of accomplished as you say, is because of my hard work and honesty. Awesome. So, Abhrekha, balancing के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं, so balancing a full-time career in technology with raising a family, definitely it can be incredibly challenging for a lot of people, right? So, can you share like a few insights into कि आपने उसको कैसे manage किया है, कैसे navigate आप उसके बीच में कर पाते हो, या कैसे आप अपने अलग-अलग priorities को आप set कर पाते हो, especially as a mother and a wife and a techie? So, see, I always believe in breaking the bigger task into smaller ones and celebrating those smaller milestones. So, I always make those achievable goals. And okay, I don't think too much if I don't get it or I don't, if I get it. So, I try to prioritize and little be proactive in my approach. मतलब मैं पहले से थोड़ी सी planning कर लेती हूँ that how I have to, fill my day today. And then I prioritize. Sometimes my kids are my priority. Sometimes my family is my priority. Sometimes my professional commitments are there, and my sometimes my passions and hobbies, so and so forth. So point I'm making is that सभी के पास वो 24 घंटे होते हैं. Now it is your interest, it is your focus कि आप किस पे ध्यान देना चाहते हैं. जिस चीज पे आपके intentions होंगे, जिस पे आप ध्यान दोगे, वही चीज बढ़ेगी. So I never believed in like I had to cut off on certain things. Like I don't go to much of kitty parties and all that, right? Because I have limited time. So I try to I don't say each one to their own, but I try to prioritize and invest time in the things which I like and build on my skills. So if you ask me how I balance is that fine. I mean I proactively plan certain things. A, B, I have my fixed routine. So there is discipline which is essential, and curiosity is the key of continuous growth. So I'm very curious to learn things, and I don't let my thoughts or say learning stop. So I really want to do lots of things, but then one at a time. So if I've have raised my children, or if I've built my career, or if I've done higher studies, I did not do at one go. I did step by step, right? So you need to plan, you need to pause, and you need to reflect that what exactly you want to achieve or how you can do that in best of your capacity. And don't try to think about outcome. Just celebrate that journey, that process, and you'll feel happy and accomplished at the end of it. Great insight. No doubt, great insight on that. So, Rekha, very well said and very well put. But I also wanted to know that एक interesting चीज मैंने आपके when I was reading your profile. So correct me if I'm wrong on that. So you have recently transitioned into studying human resources at XLRI Jamshedpur after spending a very good amount of time in tech industry. So what motivated this shift? How has it contributed, to your personal and professional growth? That's what I wanted to understand. कि स्टडी कोई हायर स्टडी के करने के लिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए व्हाट रियली मोटिवेटेड यू? See, for me, learning never stops, and there is always something new to learn and discover and evolve. So, just to correct you, I'm still into a job, but along with that job, I enrolled into this Vijaya Jamshedpur course, and which was definitely different. It is different from what I do, but I was saying I really want to evolve and understand things which I have not explored yet, and what best could be to do from such a prestigious institute. So, along with my job, I enrolled and I could score well there. So that was one reason my evolving myself, and age is just a number, right? So I didn't think that I'm picking books after 17 years, right? Because I did my engineering. So I think everybody needs to skill themselves, be competent in what you are doing, and knowledge changes you in lot many ways, right? They evolve you. Your reading capabilities, your thinking, your analytics. So really, I think all of us, it's not that if we are into jobs, we should stop studying. It should be a continuous process, and we should keep ourselves to date and competent with the market. Totally makes sense. Another thing I wanted to ask you, Abhrekha, that you have been a very strong advocate, for example, on women's empowerment, right, on this topic. And we have discussed that, how well you have been doing work-life balance. So that part is something which is very, very well explained by you. But now on the topic of women empowerment, how, can women
in demanding careers, especially like yours in these days, वो लोग क्या different कर सकते हैं in case they are facing challenges, with juggling between personal responsibilities and then, official responsibilities that they have. उसके बीच में how they can do that and keeping the concept of empowering women in workplace, especially in workplace. उसके ऊपर आपके क्या thoughts हैं? First of all, when you often say women empowerment, I think women are already empowered. Okay, they are actually very powerful and they can do multitasking, and they really are very impactful and powerful in their own. As you said, they need to understand their capabilities and come out of their comfort zone sometimes. It is difficult, it is challenging, but life is never easy, right? And you know, if there are no challenges, you won't even enjoy life. Ups and downs are part of the life, right? There's a famous quote, right? In the ECG line, if it is straight, it means we are not alive, right? So ups and downs, challenges, how we take it and what experiences we get from those challenges is very important. So as I'm saying, prioritizing and planning and your focus is very important for what you do. You will, as I'm saying, some days your family will be your priority, some days your office will be your priority. It is up to you how you balance and stop being best. Don't think that you'll be perfectionist at in everything you do. At times, you might have to be, might have to prioritize your work and your kid might. So for example, I'll take my example that I'm in a nuclear family and I had to raise my two boys with work. There were days when my kids were unwell and I had to send a medicine along with to the daycare. So I didn't while so I'm not an emotional mother. I know that even he'll be well taken care of. So that is what I'm saying. So sometimes you need to take some tough decisions. As a woman, you have to be very tough because you're handling so many things and everything cannot be perfect and you may not be number one in whatever you do. So just prioritize, think, as I'm saying, pause and reflect that what you are doing and what exactly you want in life and what gives you happiness. And that will help you define life for you. Very well put. Right. So, अवरेखा एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मैं समझ पाया बाय गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल एज अ कंटेंट क्रिएटर आपने कंट्रीब्यूट किया है प्लेटफॉर्म्स लाइक स्टोरीज एंड यू हैव बीन फीचर्ड इन वेरियस शोज एज वेल सो जो ये आपका जो इंटरेस्ट है स्पेसिफिकली ब्लॉगिंग से रिलेटेड राइट एंड पब्लिक स्पीकिंग से जो रिलेटेड आपका इंटरेस्ट है वो कैसे आपका आपके अंदर आया आपने उसको कैसे उस पर्टिकुलर पाथ को चूज किया और वो आपने कैसे शुरू किया सो एज आई वाज सेइंग कि पापा आर्मी में थे तो बहुत सारे नेबरहुड में बहुत सारे मॉडल्स थे और एक्ट्रेस वगैरह सब लोग थे सो तो आर्मी के एनवायरनमेंट में वी हैव ग्रोन अप सो वेल देयर वाज ग्लैमर बट देन ऑब्वियसली देयर वाज द डिसिप्लिन ऑफ आर्मी राइट सो आई हैव सीन ऑल थ्रू दिस माय चाइल्डहुड व्हिच शेप्ड मी मतलब उसी ने उन्होंने मुझे बनाया तो वो बचपन से शौक था स्कूल टाइम से भी आई यूज टू गो फॉर रेडियो एंड थिएटर्स एंड ऑल दैट तो वो शौक कायम रहा बट पढ़ाई के साथ वो थोड़ा पॉज हो गया बट एज आई एम सेइंग सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती और अपने ख्वाहिशों को पूरे करने के लिए कुछ आप सो आई जस्ट केप्ट ऑन डूइंग तो आफ्टर व्हेन आई वाज लिटिल स्टेबल फैमिली वाइज एंड लिटिल स्टेबल इन माय प्रोफेशन आई स्टार्टेड फॉलोइंग माय पैशंस तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए और धीरे धीरे जो मैं लिखती गई अपने एक्सपीरियंसेस से लोगों को अच्छा लगा और फिर एक के बाद एक मैंने बहुत सारी मैगजीन्स के लिए लिखा काफी शोज वगैरह किए पॉडकास्ट वगैरह तो आई थिंक इट वाज जस्ट अ वेरी ऑर्गेनिक थिंग एक्चुअली हैपेंड आई नेवर प्लान्ड बट क्योंकि एज आई एम सेइंग आई वाज वेरी ऑनेस्ट एंड फोकस्ड फॉर माय वर्क तो एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलती गई और मैं आगे बढ़ती गई Awesome. So, and at the same time, I was also able to understand that आप frequently, अपने platform को आप use करते हो to support small businesses and startups specifically. So, what drives your passion behind that? Behind helping these budding entrepreneurs. And what's your motivation behind it? वेरी सिंपल नेवर रिग्रेट हैविंग अ काइंड हार्ट क्योंकि हमको ना किताबों में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं फिलोसफी बट आई थिंक काइंडनेस इज नॉट व्हाट वी आर टॉट ओके तो when I have little skills of writing and creating videos and all that so if I have those skills and if I can help my women entrepreneurs or my fellow entrepreneurs और साथ की जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मेरे तरीके से मैं अपनी कैपेसिटी में उनकी हेल्प कर पा रही हूँ बिकॉज मुझे इतना अच्छे रिव्यूज मिलते हैं वो बोलते हैं हम अपने प्रोडक्ट के बारे में इतना अच्छा नहीं बोलते जितना आप लिख देते हैं सो आई अंडरस्टैंड दैट पल्स आई अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट और उनको उनके लिए बहुत अच्छा एक मैं राइटअप वगैरह बना देती हूँ सो इट इज वेरी इजी फॉर देम टू मार्केट एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स राइट तो बहुत खुशी मिलती है एज आई एम सेइंग
बोलते हैं ना, if you want to walk fast, walk alone, and you want to walk far, walk together. So it's a mutual, right? If I give a shout out to all these small businesses, so badle mein, when you know, when I also need some help, they are there. And so it's a mutual thing, and I do connect like-minded women. I do connect like-minded entrepreneurs. So then they grow and they have their own community. So it's very good to be part of it, of this whole ecosystem where I act as a catalyst or an enabler for them, or सबको मतलब if I spread that kindness and happiness, it comes multifold to me. So that is the driving force. And as I'm saying, the thought of being kind plus the skill set I have, I try to put best use of it. So I've also understood that you is more like a philanthropist. So you are someone who has worked with various NGOs as well for charitable causes, right? So आपके हिसाब से philanthropy specifically in a corporate setting ये कितना important है आपके लिए? बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे हम कॉरपोरेट में हैं, लेकिन फिर भी वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एंड देश के लिए या जो नीडी लोग हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए. तो बहुत ज्यादा एनजीओ वगैरह के साथ मैंने नहीं काम करा, बट लिटिल बिट कोलैबोरेशन जहाँ है, आई डू सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स वगैरह को आई रियली सपोर्ट, बिकॉज आई थिंक दैट इज माई पार्ट ऑन मदर अर्थ. फॉर एग्जाम्पल, आई मीन इम्प्लीमेंट लीड बाय एग्जाम्पल. ओके, फॉर एग्जाम्पल, टुडे my children don't use plastic brushes, they use bamboo brushes, right? The combs are also bamboo combs. So it's my part to mother earth, it's my part, my respect, my regard for mother earth, how we can do. So I'm playing just my part and leading by example, कि मुझे देख के शायद बच्चे भी यही फॉलो करेंगे, थोड़ा सस्टेनेबिलिटी, ऑर्गेनिक हर्बल प्रोडक्ट्स को यूज करना. तो that is how it is. So this is how I do. डेफिनेटली वेरी कमेंडेबल. आई मीन जब तक हम लोग अपने घर से स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक समाज में भी वो फर्क नहीं है. Correct. That is true. We won't be able to see that in the society. I totally agree. Echo that. That was great journey, Abhrekha. मैं तो काफी overwhelmed हुआ से inspired हो गया इससे. I wish I have was like you. So speaking of कि आपने एक्सरे जमशेदपुर से एचआर का आपने वो कोर्स करने का सोचा था. So I'm curious, why HR? उनमें ऐसा क्या ट्रेड है आपके करंट जर्नी में प्लस वो एचआर के कोर्स में जो आपको एक तरह से कोऑर्डिनेट करता है, मानता है. So I'm just curious, why HR? एब्सोल्युटली. इनफैक्ट जो मेरा बैच ऑफ 50 का बैच जो था हमारा, उसमें से सिर्फ मैं ही एक इंजीनियर थी who was pursuing this HR course. So as I'm saying, I always had a diverse profile, and this was some field which I had not explored but had always fascinated me. So I thought, let me explore and little bit. And I think your hard work, your analytics, whatever you learn, you can always apply in your current system. So and I was in my organization, I was closely working with HR. So I had an overview, but the depth, the knowledge which those people possess, I was not aware. This course helped me enable that how complex things are and how they operate. So that was my main intention, and obviously getting into that such a huge institute was also a dream come true. Absolutely. First of all, congratulations on that also. Thank you. Yeah, बहुत से कहा कि you need to get your hands dirty to actually understand the core of it. Correct. एक क्वेश्चन और मेरा क्वेश्चन था कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करी थी. This is actually really important in current scenario. In fact, recently हमने एक sad news सुना था regarding Vietnam में तीनों और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हमने ओवरवर्क और हाई टेंशन की वजह से हमने सुना था. वर्क लाइफ बैलेंस certainly एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है. हम सब ने फेस किया, especially after 10-20 years of experience. Some work life experience, especially from the point of view is आप एक leader. Second, आप भी एक एम्प्लॉय रह चुके हो और वो भी शायद राइट. एंड प्लस आपके जूनियर्स होंगे, अभी सीनियर्स होंगे अभी, और आप एचआर में भी आप ट्राई आउट कर रहे हो. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन वर्क लाइफ बैलेंस? हाउ डू यू इंश्योर दैट आपके टीम मेंबर्स वर्क लाइफ बैलेंस में कंफ्यूज ना हो जाए, खुद वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करो, प्लस आपके जो सीनियर्स कभी कभी ऐसे कुछ सिनेरियो दे दें कि आप वर्क लाइफ बैलेंस हो जाओ. सो ये चीजें डिफरेंट सिनेरियोज के नजर रखते हुए एक कुछ थॉट्स शेयर मेरे को. देखिए, मुझे वर्क लाइफ बैलेंस हो या कोई भी वर्क हो, आई थिंक यू हैव टू हैव दैट रेजिलियंस. ओके, सी, अनलेस आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल लोड है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, देन यू हैव नो ऑप्शन. व्हाटएवर whichever kind of job you get, you have to do, right? Luckily, we being women usually are not the breadwinners. Okay, we are the passive ones who are doing. So we always have a choice. And if you ask me, I knew that I was not very ambitious, because I'll tell you, because I knew that whether I can grow professionally later on, but I have to emphasize on my children, because their childhood will not come. उनका बचपन वापस नहीं आएगा. So I took a less challenging role. So I prioritized. Earlier I was in a very very demanding projects, and then I took some projects, some which are little less challenging. Okay?
That is how I try to balance. But as I'm saying, obviously there are bad days, there are good days. I'm not that emotional mother. We need to be very, very hard and tough and strong at times, even at workplace. Because one thing I'll say that you will continue to suffer if you have an emotional reaction to everything said to you. The power is to sit back and observing everything with logic. Okay, if words control you, then it means anyone can control you. So just breathe and allow things to pass. So obviously things will be tough, both at personal front and professional. You cannot satisfy all the people all the time. All those things. So as I'm saying, if things are getting overwhelming. You can take pause. I think every organization these days, they are very aware and alert. They're all employee friendly. But obviously there will be pressures. So you should build that resilience that all days will not be good. There will be bad days. Okay, and you have to accept it with humility. That you having light days, you'll have some harsh days as well. This is how I deal with, and I think that keeps me going. And I'm saying I've seen many women who are very happy just being homemakers. They're excellent, they're very happy. I've also seen many women who are very, very upset or guilty being a women leader. So it's all about the choices you make. So that's what I'm saying. It's very important for a woman, to understand where is the actual happiness. Is it in raising children? Is it in just being a homemaker, which is fantastic, or being a women leader? All those things. So you find your happiness, your choice, and when your passion will become your work, you won't feel overwhelmed. And you keep like there are days. So forget about me. Like for a few days, some days I'll take break and I just want to breathe and reflect on what's happening. I do the same with my children also. I never tell them to study every day. I just tell them that no, this today you are not going to study, right? So I understand that break is important. We all are under pressure. We all are drowned. Okay, we can't say that somebody is drowned just like 10 centimeter or 100 centimeter. We all are drowned with our own struggles and pressures. It is how we deal it. So as a mother, at times I'll be nagging and I'll be telling my children to study, but there'll be days when I say no, you are not going to study at all. I know that how it feels to take a break and how important it is to pause and reflect. So that's my take. That's absolutely good. और शायद आपने यहाँ पे एक बहुत ही important point touch किया कि emotional quotient on that aspect. So work life balance में मेरा एक और question है, like दो different perspective से question है. एक कि अपने perspective से, कभी कभी आप भी होते होंगे उस टाइम पे उसमें best है like you said, और कभी कभी आप overwork feel करते हो, stress बहुत feel करते हो during the work. Absolutely. So एक आप तब कैसे अपने आप को अपने आप को self motivate या drive करते हो कि यार नहीं यार, put your head down, get to work, ठीक है, get the head of it. एक ये part, second part, कभी आप एज ए सीनियर आपके पास कोई जूनियर्स आते होंगे, इंटर्न्स आते होंगे कि आज मेरा काफी हो गया, आज नहीं हो पाएगा, बट यू नो कि यार हो सकता है, और बट उस पर्टिकुलर पर्सन के स्किल्स या एक्सपीरियंस या टेन्योर या मेंटल ब्लॉक के लिए वो खींच नहीं पा रहा है, इसलिए वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रहा है, बट ऑब्वियसली आप कर लोगे. सो दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि कोई आपके पास आप ऐसा विटनेस कर रहे हो दैट समवन इज कमिंग टू यू और मे बी किसी एक्सपीरियंस उसमें प्रॉब्लम है, मैं उसको कैसे ड्राइव करूँ और एक आप कैसे खुद को ड्राइव So करूँ बिफोर यू से. अब मेरा रेट थोड़ा हाई रहता है, सो यू कैन फील फ्री टू लेट मी नो कि बहुत डाउन है. absolutely, no, absolutely, I relate with you. So, I won't say कि नहीं, I'm just idealistic, perfect. नहीं, it's very overwhelming, and at times I just lose it. And later on, sometimes there is a regret also that why I shouted at my children or why I was harsh to them. But at the same time, at times I really accept that this has happened, and I try to improve the next time. So whatever mistakes I do, perhaps I don't call them mistakes. My learnings or say experience. So I try to deal it in a more mature way the next time when it happens. Okay. But this is just be unapologetic about it. We all are humans and we all will make mistakes. So let's accept it. So I am doing wrong at something, getting overwhelmed during my work. At times it happens, but I try not to repeat that. So that is how I deal with. I don't hesitate of apologizing or appreciating. So there's something good I see, I appreciate very generously. And if I think that I'm wrong, so I definitely contemplate. And at times, you need to be harsh. Also, it is a famous saying, right? A stitch in time saves nine, right? So at times it becomes very, very, very important also because sometimes your kindness is not taken, in a right manner, and undue advantages have been taken. So you need to have that, you need to have that judgment. And if some as to your second question, if that pattern is repeated, then you have to understand that where is the problem.
But so you need to think from other. So as a leader or as somebody, I try to think as a mother or as a human, as a friend, as a wife, as any role which I play. As I'm saying, I try to sit back and think logically why this person is behaving like this, and how can I help? Is it sometimes you cry and shout when you are in pain, right? So is the person in front of me undergoing some pain, some trauma? Is there any way I can help? Okay, and so that is how I try to make that person or that person feel comfortable and try to help in my capacity. But as I'm saying, being as a mother or as a leader, there will be days where I have to be strong and take harsh decisions, which is in benefit of my organization or which is in benefit of my family. I will take. So I'm up for it. Interesting. आपने सिविल का स्टार्टअप्स की बात करी थी that you try to help those in a way of giving back, right? उस मामले में कोई ऐसा का कोई एक्सपीरियंस हो जो एक मेमोरेबल टाइम बन गया and that keeps you motivating कि I'm sure जब आपने स्टार्ट किया होगा it was just a fit और later on you thought कि नहीं यार अच्छा लग रहा है and let's keep on going for it. तो वो एक एक्सपीरियंस अगर आप कभी शेयर कर दो is that particular moment this keeps Mhm. the driver. Absolutely, I'm really blessed the way kind people like you, I'm talking to you. So there are many, many good people, and if you're good, I think God also sends good people around you. So I've been very blessed and grateful of all this while. So one of the brands, luxury trends, okay, during COVID they sent a couple of outfits for my younger one. So during COVID he did some, he wore those their outfits and modeled for them and all that virtually. So I think it's been like now 4 years. I still remember for every launch, they'll still, send me some product. Okay. So the point I'm saying, whatever relationship I make is lifelong. Okay. So we'll ensure that on my son's birthday, they are sending something, Diwali, they are sending something. Whatever that new launch, they will always keep me posted and, try to seek my help or my suggestions. So I feel so blessed that it is not that, what do you say, one time thing. It becomes lifelong relationship, and I'm always there to guide them in my capacity, like do this and give a constructive feedback is required. So I think that drives me. As I'm saying, the key is your focus and honesty. Even if there's something, I will definitely help and I'll promote, but at the same time, if I find that things are not certified or something. For example, when I write or something, there are some products where I have to I never mention anything which is related to medical, right? Because I'm not authorized to speak. So that way I'm very ethical that even if a single reader or a listener is listening to me, I should not be telling or saying anything I'm not authorized to say, even if I know. So if there's even if it is a desi nuskha which I'm using, maybe use of a hing or maybe use of a haldi, we all know, right? But I will still never mention it. I will still never endorse it because I'm not the authorized person. So that is what I'm trying to say कि when anything comes to me, मतलब मैं अगर वो सच होता है, वो सही होता है, मुझे सही लगता है, तो ही मैं उसको बढ़ावा देती हूँ. और अगर कहीं भी मुझे गलत लगता है या इनकम्प्लीट सा लगता है, तो मैं गलत चीज को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देती, नो मैटर व्हाट. Well, that's fantastic. अभी मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहा हूँ काफी हम हैवी बातें कर रहे हैं थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं इसको आप रेगुलर अपने लाइफ में कब when you're not working when you're not parenting is a full time job but generally आप as a hobby और leisure time के हिसाब से आप क्या करते हो and most importantly अभी आप कैसे फील कर रहे हो what I'm trying to say is अभी at this moment of your life what are your thoughts you are coming in your mind. इस वक्त तो मुझे लग रहा है मैं क्लाउड 9 पे हूँ. और ऑब्वियसली नॉट ओनली आपका इंटरव्यू, अभी जो मेरी लाइफ में भी आगे कुछ महीनों के जो प्लान है, सो दे आर सरियल एज एन, मुझे यकीन ही नहीं होता है कि इतना सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है. सो आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस. इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ और मैं हर मोमेंट को जीने की कोशिश करती हूँ. तो इस वक्त आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम टॉकिंग टू यू. इट्स अ रिलैक्स वीकेंड और वी अच्छे चिट चैट कर रहे हैं. और अपने फ्री टाइम में मेरे को मूवीज देखने का बहुत शौक है, बहुत टीवी देखने का शौक है, बट बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता. बट आई इंश्योर दैट आई कैच अप ऑन मूवीज. तो बस मूवीज देखती हूँ और थोड़ा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करती हूँ. और जिम का शौक है थोड़ा बहुत, गाने का शौक है, पेंटिंग का शौक है. एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि शौक बहुत सारे हैं, बट अगेन तो कई बच्चों के प्रोजेक्ट्स बनाती हूँ. वीकेंड्स पे थोड़ा इलाबोरेट कुकिंग करती हूँ. सो as I'm saying, I may not be the best in what I do, but I do
बेस्ट इन माय कैपेसिटी। तो मैं हर चीज़ को स्पेशल बनाती हूँ, हर चीज़ को सेलिब्रेट करती हूँ। मतलब जब हम एज़ अ फैमिली, हम बच्चे, हस्बैंड, हम लोग सब साथ में हैं, तो मेरे लिए वही दिवाली होती है। तो उस दिन आई जस्ट लाइट ऑल द लाइट्स ऑफ माय हाउस। आई डोंट वेट फॉर अ दिवाली पर्टिकुलरली। मुझे क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन का बहुत शौक है, एज़ इन ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, तो चीज़ों को जमाना, सब करना। सो जब भी टाइम मिलता है तो वो सब भी करती हूँ, साफ-सफाई रखना ऐसा। तो बस अपने आप को मोटिवेटेड और खुश रखने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज़ आई थिंक कि जब मैं खुश हूँ तो फैमिली खुश रह पाएगी। So I'm the anchor of the family, so that's why I ensure. Sure. कोई लास्ट आपने बुक या मूवी जो आपने पढ़ा हो या देखा हो, रीड विथ यू? कभी कभी होता है कि हम मूवी या बुक पढ़ने के समय स्टेट विथ यू है, सोचते हो कि यार थोड़ा सा बुक बन गया, मैं ये कभी अपने लो टाइम पे ये जरूर देखना चाहूंगा एंड लाइक दैट। हुआ है कोई बुक या मूवी? मुझे हर मूवी से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। इवन इफ इट इज़ अ हॉरर मूवी, इट विल टेल मी कि जस्ट फाइट योर फियर लाइक दैट, राइट? फॉर एग्जांपल मैंने मुंजिया देखी थी, तो उसमें ये था कि अपने डर को भगा दो। सो द प्रोटैगनिस्ट, वो डर रहा था, बट द मोमेंट ही बिकेम फियरलेस, ही कुड फाइट दैट इविल। सो मतलब मुझे बेसिक कमर्शियल मूवीज में भी कुछ ना कुछ मैसेजिंग मिल ही जाती है कि नहीं, अपने, बिकॉज़ वी ऑल एज़ ह्यूमन्स डरते हैं, हम लोग की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, ये वो। तो थोड़ा-सा भगवान पे फेथ, अपने आप पे फेथ, अपने अच्छे, if you are good, I think good things will happen. And even if you are bad, it's okay. We being humans, we will make mistakes. There is no good and bad. There is no standard rule. कोई कैप्सूल नहीं है, कोई सही या गलत नहीं है, because who determines it, right? फनी है ना, बिकॉज़ जब हम मुसीबत में होते हैं, कितने लोग हमारे पास आते हैं। सो इट शुड नॉट इवन अफेक्ट। एक बहुत अच्छी सेइंग है इस पे कि व्हेन यू थिंक यू आर राइट and still people are making noise, they are scolding you, they are ignoring you, or so just think that their audience, because audience is there to make noise, you be the player. Okay, so you be the player of your life. So that is how I lead ki theek hai, you cannot change people's opinion, they're going to judge you anyway. So what gives you happiness, you should go for it and do, and that is how I live my life and try to stay happy. ऑसम। आपकी कभी कोई स्पिरिचुअल जर्नी वगैरह रही है? Means my dad was very spiritual. He उनको गीता कंठस्थ थी and all that. So whatever debates वगैरह में स्कूल में रहते थे, तो उसमें वो जरूर श्लोक लिखते थे. But cut to I was not that this thing. But quite recently I started going to Gita classes. Okay, so Prabhuji from ISKCON, they come. So that has really changed me. That has really, so it's been just few weeks into that class, and we are on chapter 2 only of Gita. Trust me, it has really changed my perspective. Now I don't take things personally. It is like something, if it is coming to me, I just put in trash. I don't let it affect me. Otherwise, earlier मुझे हर opinion, हर judgment से बड़ा affect हो जाती थी. Why, why? Because बोलते हैं ना कि even if you have not hurt an ant, अपनी जिंदगी में चींटी भी नहीं मारी होगी, एक मच्छर भी नहीं मारा होगा, बट अगर आपके सामने शेर खड़ा है, शेर आपको खा जाएगा, राइट? लाइफ इज गोइंग टू बी अनफेयर. Okay, now and some questions you never have answers कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ. So going to so this is beginning of my spiritual journey. So I really again, whatever I learned from there, it has really changed me, perspective of life altogether. And I try to taking things lightly now, and try to just let it go, breathe and let it go. And because लोग हैं, बोलेंगे, आपको जितना अपने तक रखना है रखें, और बाकी बस खुश रहें. Wish well for everybody is what I think. ऑसम। आपको लगता है कि आप ब्लॉग्स वगैरह भी लिखते हो, सो ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है आपका जहाँ पे आप जस्ट लाइक प्लीज, या वो करने में मजा आता है टाइम? ये भी पेरेंटिंग रिलेटेड होता है, बिकॉज ये सब मतलब आई कैन रिलेट इट बेटर, बिकॉज आई ऑल्सो हैव 2 चिल्ड्रन. तो एंड दैट टू 2 बॉयज. तो पेरेंटिंग ब्लॉग्स लिखने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि I can quote my own examples. I can tell that how I dealt with all those things. So that kind of thing. So obviously parenting blogs really help me. Yeah, that also excites me when it comes to कि today I know that everybody wants to do something. तो हर हर औरत में बहुत पोटेंशियल है, और अगर हम लोग नहीं अपने पोटेंशियल को जानेंगे तो विल रस्ट. ओके, तो कंफर्ट जोन से बाहर आना, तो इस तरह के जो थोड़े मतलब हाउ आई कैन कनेक्ट देम, कि कैसे आप आजकल चैट जीपीटी है या यूट्यूब है, तो कैसे टेक्निकली दे कैन बिकम साउंड, कौन से कुछ कोर्सेज करके वो अपलिफ्ट हो सकते हैं, मतलब इस तरह से. या जो मनी मैनेजमेंट, या कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं. तो इस तरह से जो थोड़े मोटिवेटिंग होते हैं, फॉर women, because it is very tough for a women to balance home as well as their her aspirations. तो it is not, ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी कोई कंपनी में काम करते हो. आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हो, उसको कैसे बेस्ट करो. चाहे वो आप घर से होम कुक बन जाओ आप, या अपना एक यूट्यूब चैनल कर दो, बट द की इज कंसिस्टेंसी, फोकस एंड ऑनेस्टी. अगर आप ईमानदारी से कुछ भी काम करेंगे तो वो अच्छा रहेगा. तो इस तरह के ब्लॉग्स जो कि लोगों को प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने का, बिकॉज
आई एम अ लाइव एग्जांपल ओके दे आई राइट सो मेनी ब्लॉग्स इतनी मैगजीन्स में टॉप मैगजीन्स में माय ब्लॉग्स आर्टिकल्स कम एंड ऑल दैट आई एम नॉट बीइंग प्रोफेशनली ट्रेन्ड मैंने कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली लिखते लिखते मेरा क्योंकि शौक था अपने आप ही आई लर्न ये जो एक मिथ है कि नहीं आपको बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए आपको बहुत ज्यादा स्किल्स होनी चाहिए ऐसा कुछ नहीं है मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने मोटिवेट करा उन्होंने यूट्यूब देख देख के आज वो इतनी बड़ी बड़ी आर्ट क्लासेस ले रही हैं तो आजकल इतना सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है इट्स जस्ट दैट आपको सही अपनी राह पकड़नी है और आपको मेहनत करनी है और अपने आप एवेन्यूज खोलते जाएंगे सो इस तरह की चीजें रियली आई मीन आई लाइक राइटिंग एंड टॉकिंग अबाउट जैसे पेरेंटल एडवोकेसी की बात करी थी तो that got me curious that okay मेरे actually दो questions है पेरेंटल एडवोकेसी के रिगार्डिंग so कोई particular specific parenting challenge जो आपने फेस करी हो as a parent and second question होगा मेरा कि what would you like to give as a tip to the new parents who are coming in. तो आप जो बोल रहे हैं चैलेंजेस तो रोज ही नहीं चैलेंजेस है बिकॉज माय एल्डर वन इज अ टीनेजर एंड यंगर वन इज क्लास 10 इज जस्ट 10 years old ओके तो चैलेंजेस तो डे टू डे बेसिस हैं चैलेंजेस तो रोज ही हैं बट एक की है पेशेंस पेशेंस इज द की सो आई एम आल्सो लर्निंग and one thing is you need to lead by example okay I have seen this बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए झूठ नहीं बोलना चाहिए और वो खुद पेरेंट्स भी कितनी बार झूठ बोल देते हैं अब बच्चे इतने समझदार हो गए हैं कि उनको पता है कि अच्छा ऐसा हमें बोलना है कि झूठ नहीं बोलना लेकिन हम झूठ बोलेंगे तो चलेगा so that is what my mom and dad are perhaps doing so, you be very मतलब just lead by example and just take it easy I have learned it hard way कि अगर मान लो वो अपनी चीजें नहीं कर रहे हैं because they are different individual okay while you are giving them birth you cannot control them there is a difference between love and control do you really love them or do you really control them that difference took me couple of years to understand कि नहीं यार I cannot control मैं if I'm saying कि अभी कभी साफ करो it's not necessary वो अभी करेंगे अब मैं अभी कभी खाओ it's not necessary they will do they are responsible but give them some time they are a different individual they are operating at a different frequency respect that तो ऐसा है और जैसे और ऐसे और न्यू पेरेंट्स को मैं यही बोलूंगी कि ऑलवेज ड्रॉ लाइन जैसे एक जो बात है आजकल के बच्चों में मैं अपने बचपन में बता रही हूँ कि हमको छोटी सी भी कोई आई रिमेम्बर इफ माय डैड यूज्ड टू गेट बुक भी दे देते थे या एक कुछ हमारे नए शूज या कपड़े भी आ जाते थे तो हम बहुत खुश हो जाते थे और बहुत होता था हमारे लिए वो और आजकल के बच्चे हैं उनको हम जूते कपड़े कुछ देंगे तो दिल से कि ये तो आपने गिफ्ट करा ये हमें थोड़ा चाहिए था सो अपने बच्चों को भी नाउ इफ दे आस्क बिकॉज नाउ दे आर लिटिल लाइक 10 and 14 अब मैं उनको बोलती हूँ कि डोंट आस्क थिंग्स फ्रॉम मी ट्राई टू अर्न इट व्हेन आई से अर्न एसेंशियली आई एम नॉट सेइंग अर्न मनी अर्न मतलब अर्न विथ योर कोड ऑफ कंडक्ट अर्न विथ योर गुड डीड्स अर्न विथ योर हार्ड वर्क देखो आज मम्मी मैंने 5 घंटे पढ़ाई करी सो दिस काइंड ऑफ या आज मैंने अपना कमरा जमाया reward me you don't see I think these days children have think about their rights but they don't understand that with rights come the responsibilities okay so I've seen my children also demanding something while they are very 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 good people but at times they'll be asking me ye chahiye wo chahiye like first you understand that why you need it will you be responsible and then ask for example जैसे बच्चे pets बोलते हैं are they okay are they ready to take the entire responsibility no right so it's very easy to ask for things but are they responsible enough so that is how to the new parents, I just say don't give them everything just like that. Always teach them value for money. Always teach them, value of hard work. And then give because every parent wants only best for their child, right? For their children. So वैसा ही है but थोड़ा सा balance रखें. But as I'm saying, each one to their own. I'm also learning. I'm no way perfect. But this is all what I've learned with my experience. कि just let go, let them evolve, let them grow. But obviously be cautious which company they are in and if they are going in a wrong direction. You have, especially अभी mobiles है, social media है. Like that. Great advice. I move back to my work front पे वहाँ पे जैसे आपने like question आता है generated at every profile at every stage quietly that how to keep yourself updated to the latest tech advancement की हो रही है and as you grow up आप manager की position पे आते हो senior manager होते हो become extremely important कि अपने आप को update करो because हम जगह से पढ़ के आए हैं सर्टिफिकेट कर लिया हमने so that fades away with gradual time yeah how to keep yourself updated and what would you recommend as a tip to budding managers out See, definitely, I think everybody is, so you know that if you're surviving in this competitive era, so you have to be upgraded. Otherwise, you're easily replaceable, right? Nobody is indispensable. Everybody can be replaced. आप नहीं है competent,
इतना रिसेशन है, ये है, सबसे पहले अगर आप में वो बात नहीं है तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फॉर दैट सर्वाइवल ऑटोमेटिकली आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। नई टेक्नोलॉजी अभी जैसे जन एआई वगैरह आ रहा है, जनरेटिव एआई, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं अपने काम में उसको लाना ही पड़ेगा। और आप जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, यू हैव टू बी दैट विजनरी। तो मे बी आप ग्राउंड पे नहीं करेंगे, बट यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल, यू हैव टू हैव दैट विजन सेट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी टीम्स के लिए, हाउ बेस्ट यू कैन डू। आप अगर अपडेटेड रहेंगे, आपको कुछ अच्छा दिखता है, सो यू कैन ऑलवेज एक्सचेंज। तो बहुत सारे तरीके हैं, यू हैव योर नेटवर्किंग, यू टेक अंडरगो ट्रेनिंग, यू build that skill, आपकी टीम को इतना अच्छा बनाओ with help of trainings, with help of other tools and facilities, अच्छा लाइसेंस वगैरह लाओ, उनको इनेबल करो विद गुड टेक्नोलॉजी। ऑटोमेशन पे ध्यान दो। अगर लोग कुछ मतलब रूढ़ीवादी वाला मतलब जो कन्वेंशनल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उसकी जगह उनको बोलो मैनुअल काम ना करके ट्राई टू ऑटोमेट। जैसे सिंपल अगर एक्सेल पे बहुत टाइम लगा रहे हैं, तो उनको बोलो मैक्रो बना ले या पावर बीआई यूज कर ले। इट ऑल डिपेंड्स कि मतलब आपकी क्या फील्ड है, कैसे आप जो रिडंडेंट टास्क है, जो बार बार रिपीटेटिव टास्क है, उसको आप कैसे कम कर सकते हैं, सो दैट वो उस इंसान की बैंडविड्थ बच जाए और आप उसको बेटर यूज में लगा सकें, स्ट्रेटेजी में, एनालिटिक्स में। तो एज ए मतलब आपको यू हैव टू बी अ विजनरी, यू हैव टू थिंक कि आज से 10 साल बाद किसकी जरूरत होगी, एंड देन यू हैव टू अलाइन योर एक्शंस, उस हिसाब से आपको करना चाहिए। बट पढ़ते रहना चाहिए और अपडेटेड रहना चाहिए, अंडरगो टेस्ट, टेक ट्रेनिंग, डू सर्टिफिकेशंस, यू हैव टू, देयर इज नो शॉर्टकट टू दैट। Great advice. That's all I had. Rahul, do you have any questions? Yeah, I think, I mean, most of the things, I think very well have already been answered by Abhrekha. Last but not the least, I just had this one question. Ki, Abhrekha, you have been doing so much, in different aspects of life. So, अगर मैं बात करूं specifically these, small businesses हो गए, entrepreneurs हो गए, या even specifically content creator, for example, right, that you connect with. So, what is the ultimate advice, that one advice that you will give to any aspiring content creators or bloggers who are starting with blogging? So उनको आप एक वो one ultimate advice as per your experience वो आप क्या देना चाहोगे? Very strange, but on the contrary, to be one of the best writer, you have to be a very good reader and a listener. Okay, that will enhance your writing capabilities. Basically, अगर आपको लिखना है तो सबसे ज्यादा आपको सुनना भी पड़ेगा और आपको रीड भी करना पड़ेगा, और एक डिसिप्लिन रूटीन चाहिए। जैसे और आप डोंट वेट कि नहीं हम इस पर्टिकुलर टाइम पे ही लिखेंगे, या इस पर्टिकुलर आपको जो मन में आ रहा है, आपको जैसा फील हो रहा है, कभी प्रकृति को देख के, या आपके मन में कोई दुख है, मतलब या सुख है, जो भी है, मतलब एक्सप्रेस करें अपने को और रोज थोड़ा थोड़ा लिखें, हैव दैट रूटीन। और धीरे धीरे इट्स अ जर्नी, ओवरनाइट आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो कीप ऑन एम्फेसाइजिंग योर स्किल्स, जो भी आप थोड़ा बहुत लिखते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली से शेयर करें, उनका फीडबैक लें, और अपनी राइटिंग स्किल्स को एनहांस करते रहें। और इट्स अ जर्नी। और जरूर इसी तरह से आई रियली विश कि ज्यादा से ज्यादा लोग लिखें, समझें, और उससे मतलब सहजता भी बढ़ती है, संवेदना भी बढ़ती है। तो just be sensitive about what you are writing, and don't hurt anybody, and just think how you can add value to people's life, how it can help तो और आपके अपने एक्सपीरियंस, बिकॉज एज आई एम सेइंग, हर इंसान का विपत्ति से या चैलेंज से डील करने का तरीका डिफरेंट होता है। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट रेजिलियंस मैकेनिज्म, ओके, एंड एवरीबडी इज इंस्पायरिंग बिकॉज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट स्टोरी टू टेल, राइट। तो कभी जैसे प्रॉब्लम आएगी तो समटाइम्स आई विल गेट पैनिक एंड ऑल दैट, बट देयर आर पीपल हु हैव मोर पेशेंस एंड दे डील इट। सो जो भी आपको फील होता है, जैसा भी आपको फील होता है, रोज आप थोड़ा थोड़ा लिखें, बहुत पढ़ें और सुने, अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाएं, और लोगों से फीडबैक लें। और आई जस्ट विश ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी हु इज लिसनिंग एंड एसोसिएटेड। Great. Thank you That so was much for that. I quite think good. great message there. Yeah, of course. So अभी हम यहाँ पे जैसे हमारा ये एपिसोड क्लोज करने वाले हैं, और उसके पहले आप बता, if you have any parting words or any suggestions or any words for our listeners. So, I mean, I just want to tell people to be kind, and just think that great people think they are ordinary, and ordinary people think they are great. That's the difference. So just be humble, just be kind. Don't think that you know everything and you are God and all those things. Let people have their own perceptions. Respect them and treat everybody with kindness. And let's make this earth a better place to live with a lot of love and harmony. So beautiful. Thank you so much, Abhrekha, for sharing your inspiring stories, and of course, जो passion है वो आपने हमारे साथ share किया.
absolute pleasure of having you on this show, RAD Show. We are really grateful for your time, your wisdom, and of course, our listeners. And we both will be sharing good nuances from each other, from your insights. So now to our listeners, don't forget to check out Abhrekha's channel. Also, we'll share that in the description below. So that's all from our end. Take care. God bless. Thank you so much, Thank Abhrekha. you so much. Thank you. Thank you for your time. Great. Wishing you all the success. Thank you. Bye.